Bismillahirrahmanirrahim. We are doing the chemistry of carbohydrates. You can say the introduction to the carbohydrates. Now, the beta rotation. Beta rotation, the alpha and beta forms of D-glucose are interconvertible. D-glucose, जैसे कि हमने पढ़ा था कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द फारदेस्ट कार्बन 1 2 3 4 5, यानी जो सबसे दूर होगा कार्बोनिल ग्रुप से, उस पे हमने देखना है. इफ इट इज ऑन द राइट साइड विच इज द डी, एंड if the hydroxyl group on the farthest carbon atom is on the left side, it is L-glucose. And alpha and beta alpha and beta forms भी हमने देखा था. एनोमेरिक कार्बन जो बनता था, the reaction of the last carbon with the carbonyl group, aldehyde group in the aldo sugar, and keto with the keto sugar, ketone group in the keto sugar. तो इसमें अगर एल्डिहाइड होगा तो नेचुरली वो C1 पे होगा और कीटो होगा तो C2 पे होगा. तो दैट जनरेशन ऑफ ए न्यू एनोमेरिक कार्बन. एनोमेरिक कार्बन होता है कि विच रिएक्ट्स विद द 4 डिफरेंट एटम्स. उसके बाद तो ये इट विल जनरेशन ऑफ द न्यू कार्बन, एनोमेरिक कार्बन. तो यहाँ पे फिर ये अल्फा और बीटा, दीज आर दी इनशुमर. अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोज इंटर, ये दोनों आपस में चेंज होते रहते हैं. एंड दिस स्पॉन्टेनियस फिनोमेना इज कॉल्ड द म्यूटा रोटेशन. It is the process, a freshly prepared solution of the glucose in which the direction of the plane polarized light goes on changing for some time till it becomes fixed. The reason of this muta rotation is the unfolding of the ring structure to the state chain form in order to maintain the equilibrium between alpha and beta forms of glucose. ये देखिए, ये this is the रिंग स्ट्रक्चर, और उसके बाद इट विल बी स्टेट फॉर्म में आ जाएगा और देन इट विल अगेन बिकम दी. तो यहाँ पे इट इज द अल्फा डी ग्लूकोज. अल्फा बिकॉज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑन द लोअर साइड, एंड बीटा द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑन द अपर साइड. इन द नेचर द मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज इन द बीटा डी ग्लूकोपारानोज फॉर्म में है. अल्फा डी ग्लूकोपारानोज में नियर अबाउट 36% एंड बीटा डी ग्लूकोपारानोज में 64%, एंड वेरी स्मॉल अमाउंट 0.01% is in the state chain form. This is the muta rotation, this interconversion alpha to beta. It is the, ये बीटा से अल्फा में भी चेंज हो सकती है और अल्फा से बीटा में भी चेंज हो सकती है. डी ग्लूकोज एंड पैरानोज. डी ग्लूकोज इट इज दी C1, C2, C3, C4, ये कार्बोनिल है, कीटो ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप से जो सबसे लास्ट पे है दैट इज द C5. एंड फॉर डी ग्लूकोज यू विल सी दैट the hydroxyl group, if the hydroxyl group on the right side, it is the D glucose, and if it is the ring form, the hydroxyl group will be on the lower side in the delta. And the keto group, D fructose. Fructose में you can see the keto group C2, and the farthest is the C5. 1 2 3 4 5, और यहाँ पे it is on the left side, it means that is the D fructose, and here the hydroxyl group on the lower side, it is the D fructose. D and L sugars जो भी हमने बताया. The configuration of the asymmetric carbon atom. Asymmetric carbon atom farthest from the aldehyde or keto group with reference to D or L, capital D, capital L, glyceraldehyde, determines
whether a monosaccharide belongs to D or L series. The D form, the hydroxyl group is on the right side, and in the L form, the hydroxyl group is on the left side, as you have seen in the diagram. D-glucose. This is the carbonyl group. 1, 2, 3, 4, 5. This is the farthest carbon atom, 5th. And you can see that it is the asymmetric carbon atom. It is 4 group different के साथ ये react कर रहा है, और you can see the hydroxyl group is on the right side. So it is the D-glucose. Then the D-glyceraldehyde and L-glyceraldehyde. 3 carbon atom. This is the aldehyde group and this is the farthest. ठीक है, इससे सबसे ज़्यादा, and you can see the hydroxyl group is on the right side. It is the D-glycerol, D-glyceraldehyde, and if it is on the left side, it is the L-glyceraldehyde. Isomers and epimers. Compounds that have the same chemical formula but have different structures are called isomer. This is the definition, very important. अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं. Compounds that have the same chemical formula but have different structures are called isomers. For example, fructose, glucose, mannose and galactose. ये सब का are isomers of each other having the same chemical formula. इन सब का chemical formula एक है C6, H12 and O6, लेकिन इनके structures अलग हैं. So it means that these are isomers of each other. Compounds that have the same chemical formula है fructose का, glucose का, mannose का, galactose का, C6, H12 and O6, but having the different structures, लेकिन इनके structure different हैं. Carbohydrates, isomers that differ in configuration around only one specific carbon atom, with the exception of the carbon anomers, are defined as the epimers of each other. ये तो isomers थे. What is the epimer? Epimer में इनमें कार्बन, किसी एक कार्बन पे carbonyl carbon के अलावा the configuration of the hydroxyl group will be changed. For example, glucose and galactose are at C4. These are epimers. ये C4 पे इनकी जो hydroxyl group की है वो change है. Their structure differ only in the position of the hydroxyl group at carbon number 4. The carbon in sugar are numbered beginning at the end that contain the carbonyl carbon, that is the aldehyde or keto group. Aldehyde और keto से आपने गिनना शुरू करना है. Glucose and mannose are C2 epimers. Glucose और galactose क्या है? C4 पे epimers हैं, और glucose and mannose are C2 epimers. However, galactose and mannose are not epimers. They differ in the position of the hydroxyl groups at 2 carbon atoms. अगर 2 carbon atom पे different है तो that will be not epimer at carbon number 2 and 4, and therefore defined only as the isomer. This is the glycosidic bond. You can see it is lactose disaccharide, और इसमें galactose 1 beta 1 4. This is carbon 4 of glucose and this is the carbon 1 of galactose, and it is called the galactose beta 1 4 glucose. Carbon number 1 is reacting with the 4 and that the beta carbon. Now from here you can see that in the galactose and glucose these are C4 epimers. You can see 1 2 3 4. ये carbon number 4 पे in the galactose hydroxyl group is on the left side, but in glucose 1 2 3 4 carbon number 4 पे hydroxyl group is on the right side. It means that they are differ in the hydroxyl group only at the, बाकी सारा structure एक है, but carbon number 4 पे hydroxyl group
galactose में it is on the left side and glucose में it is on the right side. So you can call that these are the C4 epimer. In the same way mannose, if you see the mannose and glucose, here you can see that in the mannose 1 2 carbon number 2 hydroxyl group, in mannose hydroxyl group is on the left side, but in the glucose hydroxyl group is on the right side. So these are epimers at C2 and all others are the isomers. Enantiomers. A special type of isomerism is found in the pairs of the structure that are mirror images of each other. एक दूसरे के mirror images हैं. These mirror images are called enantiomers, and the two members of the pair are designated as the D and L sugar. The vast majority of sugars in the humans are D sugars. जो हमारे हैं, these are all the D sugars. In the D isomeric form, the hydroxyl group on the asymmetric carbon atom. Asymmetric carbon atom, a carbon linked to 4 different atoms or group. Asymmetric carbon atom, a carbon linked to 4 different atoms or groups. In the D isomeric, hydroxyl group on the asymmetric carbon atom farthest from the carbonyl carbon, यानी कार्बनल कार्बन से सबसे जो लास्ट पे है, सबसे दूर है, is on the right. If it is on the right hydroxyl, it is called the D sugar, whereas in the L isomer it is on the left side. अगर ये यहाँ पे hydroxyl group on the left side पे है तो it is the L sugar. And the enzymes known as racemase able to interconvert D and L isomer. जो enzymes हैं वो उनको these enzymes called the racemase. और ये फिर इसमें इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि वेदर इट इज डी शुगर और एल शुगर के लिए अलग है और डी शुगर के लिए अलग है. डी शुगर मैमल्स में है ज्यादा. देन द साइक्लाइजेशन ऑफ द मोनोसैकेराइड. less than 1% of each of the monosaccharide with 5 or more carbon exists in the open chain. आपने देखा था कि जब म्यूचुअल रोटेशन में ओपन चेन में लेस देन 1% था, बाकी अल्फा में 36 था और बीटा में 64 था. लेकिन जो ओपन चेन है इट इज ओनली लेस देन 1%, 0.01, जिसको हम एसाइक्लिक फॉर्म भी कहेंगे. Rather, they are predominantly found in the ring. They are found in the cyclic or ring form, in which the aldehyde or keto group has reacted with an alcohol group on the same sugar, making the carbonyl carbon number 1 for an aldose or carbon 2 as a asymmetric. इसमें पहले जो कार्बन नंबर एसिमेट्रिक एटम है वो आपने देखा कि जो कि 4 से रिएक्ट कर रहा है. तो जब ये इट विल रिएक्ट विद द कार्बन 1 इन द एल्डो और कार्बन 2 कीटो, तो ये एक और एसिमेट्रिक, देयर विल बी जनरेशन ऑफ ए न्यू एसिमेट्रिक कार्बन एटम. और इसी पे हमने देखना है कि वेदर इट इज अल्फा और द बीटा. पायरानोज पायरॉन refers to a 6-membered ring consisting of 5 carbons and 1 oxygen. For example, glucopyranose. Whereas the furan ring denotes a 5-membered ring with a 4 carbons and 1 oxygen. Then the anomeric carbon. Anomeric carbon cyclization creates an anomeric carbon, the former carbonyl carbon. जो पहले carbonyl carbon था, that become the, वो पहले 3 के साथ react कर रही थी, लेकिन जब ये उसके एक्स्ट्रा रिएक्शन किया इसने C5 के साथ, तो ये फिर 4 के साथ रिएक्ट करेगी, generating the alpha and beta configuration of the sugar. For example, the alpha D glucopyranose and beta D glucopyranose. तो इस पे फिर हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखना है जो एनोमेरिक कार्बन है, उस पे जो न्यूली जनरेटेड एसिमेट्रिक कार्बन, इट इज द न्यूली जनरेटेड एसिमेट्रिक कार्बन एटम, इट इज कॉल्ड द एनोमेरिक कार्बन. इस पे हमने फिर देखना है कि जी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर साइक्लिक में है इट इज बिलो और अबव, और इसी तरह दैट विल बी दी अल्फा एंड बीटा.
These two sugars are both glucose but are anomers of, इनको हम these are will call the anomers, alpha and beta anomers of each other. In the alpha configuration, the hydroxyl group on the anomeric carbon projects to the same side as the ring is modified Fischer projection formula and is transferred to the methyl group CH2OH group in the Haworth projection formula. Because the alpha and beta forms are not mirror images, they are referred to as the diastereomers. Enzymes are able to distinguish between these two structures and use one of these preferentially. ये डायस्टीरियोमर्स होंगे, आइसोस्टीरियोमर्स नहीं होंगे क्योंकि ये डिफरेंट हैं. These are not mirror images of either. For example, glycogen is synthesized from alpha D glucopyranose. Glycogen, which is the storage form of the glucose in the human being, mammals में. तो यहाँ पे ये क्या है? It is synthesized from the alpha D glucopyranose, whereas the cellulose जो के प्लांट्स में है is synthesized by the beta D glucopyranose. ये एंजाइम, इसका मतलब है हमें अगर सेलुलोज नहीं होगा तो हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे. The cyclic A, alpha and beta anomers of a sugar in a solution are in equilibrium with each other and can be spontaneously interconverted, a process called the beta-rotation जो हम पढ़ चुके हैं. Then the sugars exhibit various forms of isomerism. Glucose with 4 asymmetric carbon atoms can form 16 isomers. The more important types of isomerism found with glucose are as follows. D and L isomer, वही जो पहले हमने पढ़ा है, D and L isomerism. The designation of a sugar isomer as the D form or its mirror image as the L form is determined by its spatial relationship to the parent compound of the carbohydrates, the 3-carbon sugar glyceraldehyde or glycerol. The L and D forms of the sugar and of glucose, the orientation of the hydroxyl groups around the carbon atom adjacent to the terminal primary alcohol carbon number 5 with the glucose determines whether the sugar belongs to D or L. और कार्बन से सबसे आखिर पे जो हम पहले पढ़ चुके हैं. When the hydroxyl group on this carbon is on the right side, the sugar is the D isomer, and when it is on the left side, it is the L isomer. Most of the monosaccharides occurring in mammals are D sugar, and the enzymes responsible for their metabolism are specific for this configuration. The presence of asymmetric carbon atom also confers optical activation the compound. When a beam of plain polarized light is passed through a solution of an optical isomer, it rotates either to right, अगर right को करेगी तो it is the dextrorotatory, इसको हम प्लस साइन से करेंगे, और to the left levorotatory और नेगेटिव साइन से. इसको पहले स्मॉल एल और स्मॉल डी भी कहते थे, लेकिन अब वो ऑब्सोलीट हो गया है. तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी को हम प्लस कहेंगे और लीवरोटेटरी को माइनस कहेंगे. द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए stereochemistry of the sugar, so it may be designated as the D minus and D plus or L minus or L plus. For example, the naturally occurring form of fructose is the D negative. In solution, glucose is dextrorotatory. Glucose जो है जो dextrorotatory है, and glucose solutions are sometimes known as the dextrose. इसीलिए जो हमारा commercial या जो हम यूज करते हैं हॉस्पिटल में ग्लूकोज, these are called dextrose, 5% dextrose in water because it is dextrorotatory. Isomers having the property of rotating the polarized light to the right or left direction are called optical isomers. Isomers having the property of rotating the polarized light to the right or left direction are called the optical isomer. Light is plane polarized if all the light waves are vibrating at the same parallel direction.
अब इसको स्मॉल डी और स्मॉल आई, अब तो प्लस और माइनस ही कहते हैं, लेकिन बहरहाल ये पहले दीज वर कॉल्ड दी स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। ऑप्टिकल जो प्लस और माइनस, अब उसको कहना शुरू कर दे, दिस इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। Optical isomer rotating the plane polarized right to the direction are known as the D sugars, and those rotating the or D or plus, and those rotating the polarized right to the left direction are the L sugars, small l. It is very important not to confuse between the capital D and capital L sugars and small d and small l sugar. These two abbreviations have no relationship between the, हमने पहले पढ़ा है कि कैपिटल डी और कैपिटल एल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द फादर्स पे था, और ये है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सिग्निफाई द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड द एसिमेट्रिक कार्बन ऑफ ए मोनोसैकेराइड, whereas D and L, small d and small l signs signify the rotation of the plane polarized light to the right. If it is to the right को करेगी तो it is the dextrorotatory, or if it will rotate to left, it will be the levorotatory. A sugar may be D sugar as well as levorotatory. L sugar, for example, D fructose is a powerful levorotatory, though it is a D sugar, but it is a levorotatory. Thank you very much. Next, inshallah, we will do the enantiomers.